बहुत दिनों के बाद यू कैन फील द वो जो गर्मी लगती है ना कि फिल्म आ रही है, वो फिल्म वाली बहुत टाइम से नहीं लग रही थी सिंस द पेंडेमिक। आई फील हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सफर किया है उन्होंने बहुत। What is your prediction for say 26th of January? Sky's the limit. Sky's the limit. If you see Triple R doing the kind of noise it's doing, so it also intrigues other audiences to other big films that are coming from the same region. Shah Rukh is an overseas superstar. That goes without saying. That goes behind as back as Dilwale Dulhania. मतलब can I give you a little bit of spoiler इस पिक्चर का कि नहीं देना है? At one point they were thinking कि पठान का ट्रेलर भी नहीं छोड़े। वो एक फायर है कि नहीं? शाहरुख खान दीपिका पादुकोण केमिस्ट्री। ब्लैक स्मोक है उसके अराउंड, उनके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स के अराउंड। अमूल, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ फरीदून, रियली नाइस टू स्पीक टू यू, इट्स बीन सो लॉन्ग। हम लोग जनरली मिलते ही करते थे, एक आधे हफ्ते में बम्प हो जाते थे एक दूसरे से कहीं पे। बट इट्स रियली राइट। नाइस टू वर्चुअली मीट यू नाउ एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड कनाडा आई एम की डूइंग ठंडी वेरी आपको वेल। ज्यादा आई एम ज्यादा डूइंग आपको वेरी तंग वेल। नहीं कर रही। नहीं, इतना ठंड यहाँ पर नहीं है एक्चुअली। मैं वैंकूवर के पास में हूँ, यहाँ पर उतना सर्दी नहीं होता है। सो देयर वाज ओके। स्नो which happened, but now I think we've got a bit acclimatized as well. जी। So I think the weather is fantastic right now. It's really good. सुपर। You should come and visit us. All right, so Amul, right now, जैसे मैंने हमेशा आपके मैंने अपडेट, स्पेशली बॉक्स ऑफिस के अपडेट्स मैंने बहुत ही कीनली फॉलो किए हैं। एंड जी। जो आपका जो एक प्रिडिक्शंस होता है फिल्म्स के, आई थिंक ओपनिंग को लेके बहुत स्पॉट ऑन होता है। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट फीचर। जी। नाउ आई थिंक हम लोग एक बहुत ही एक आई थिंक मेरे ख्याल से हैप्पी जोन में है। 2022 थोड़ा सा बॉलीवुड के लिए स्पेशली मे बी शायद उतना अच्छा नहीं रहा था। वी हैड लाइक थ्री बिग फिल्म्स, बट उतना मे बी शायद बाकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। बट जिस तरीके से पठान को लेके एक जो एक्साइटमेंट है विद इन द ट्रेड, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको फॉर द इंटायर फिल्म इंडस्ट्री? हाउ डू लुक एट इट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट राइट नाउ। बहुत दिनों के बाद यू कैन फील द वो जो गर्मी लगती है ना कि फिल्म आ रही है, वो फिल्म वाली बहुत टाइम से नहीं लग रही थी। जी। You would have releases, films have done well also in the past, like you were rightly pointing out. Last year was not that great, but आप ओवरऑल देखिए तो साउथ की पिक्चरें भी बहुत चली हैं, नॉर्थ इंडिया जो मार्केट कहा जाता है, इंक्लूडिंग बॉम्बे। तो उस हिसाब से तो बहुत मतलब बिजनेस ढंग का ही हुआ है। बट इट्स जस्ट दैट द हिंदी फिल्म्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अदर लैंग्वेज फिल्म्स व्हिच हैव बीन patronized by audiences across the country in that sense. Correct. पर आई थिंक सिंस मे बी लास्ट ईयर का अगर एग्जांपल दूं तो KGF 2 पे जो बज फील हो रहा था राइट, ट्रेड में ऑडियंसेस में, वो पैल्पेबल लगता है, जो कि अरे यार ये खुलने वाली है पिक्चर, कंफर्म खुलेगी ये पिक्चर। ब्रह्मास्त्र में भी उतना था, मगर आई फील इट्स रीचिंग इट्स पीक। अभी अभी भी एक हफ्ता है पिक्चर को रिलीज होने में। आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे तक जब हम रिलीज पे आएंगे, आई थिंक दैट दैट विल ओनली मल्टीप्लाई फर्दर मोर आई फील। तो वो पैल्पेबल वाइब पूरे ट्रेड में, पूरे नॉर्मल ऑडियंसेस के थ्रू में बहुत यू आर फीडिंग ऑफ दैट राइट नाउ, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज हम लोग लाइक सिंस द पेंडेमिक आई फील हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सफर किया है उन्होंने बहुत। देयर हैव बीन फिल्म्स व्हिच हैव नॉट वर्कड, जो रेगुलर टाइम में शायद आती तो बहुत ढंग का बिजनेस कर जाती, या एवरेज बिजनेस तो कर ही जाती। अब वो पूरा वो ब्लॉक चला गया है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक पिक्चर आए जो अच्छी तरह से, सबर से अच्छा पैसा कमा के जाए, एंड गिव्स इट बैक टू द इंडस्ट्री इन दैट सेंस। एंड पठान कैन वेरी वेल बी दैट फिल्म राइट नाउ। Okay, so let's come to the prediction part of it right away, which is something that you specialize in. आपको क्या लगता है? It's releasing on a Wednesday. What do you think will be the first day, say in India? See, I from whatever I've been, figuring out right now, मुझे लग रहा है कि it can be anywhere between 35 to 38 crores in Hindi. Other languages I'm not getting involved in. I think that is very staggered in India right now. You can't really have a pinpoint on that. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रह्मास्त्र नॉन हॉलीडे पे आई थी, दैट ओपन टू अराउंड 31 इन हिंदी। ओवरऑल 35 था, बट दोज 4 crores वर अगेन trickle down to other languages in the country. But 31 crores predominantly हिंदी का नंबर था पहले दिन पर।
non-holiday, non-franchise film. मतलब फर्स्ट फिल्म थी, फर्स्ट पार्ट था, राइट? अभी हम सोच रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 आएगी, तो दैट्स अ किकर ऑन अ सीक्वल, बट राइट नाउ as an individual first time film, that's what it did. I feel, given that Shah Rukh is coming after such a long time, Wednesday is a working day, so that takes a hit. Like शाम के shows से it will definitely pick up, which is a norm, वो होने ही वाला है. I That's why I feel 35 to 38 crores is a great range. It can having said that, it can very well pick up in the next week जब advance bomb India में genuinely खुल जाएगा. अभी तक advance India में खुला नहीं है. So once that comes in, maybe you will get a better picture. But right now, if I have to predict completely in the dark, or I would say around 35 to 38 crores. But having said that, अगर ये 26 तारीख को आती, which is a Thursday, they would have actually, the film right now has the legs to beat like a war also, which is the highest Hindi no, highest Hindi day one, including a holiday. That was a holiday at that point. October 2nd पे आई थी war. So given that in mind, I feel वो खोल सकती थी, वो 55-50 के करीब वो खोल सकती थी on a non-holiday, on a holiday day on 26th of January. But I think you have to give that little bit of a subtraction in that sense. I feel 35 to 38 crores is conventional and not going too overboard, because people could go overboard in predicting numbers like this also. करेक्ट. सो मे बी यू सेइंग कि अगर हम ऑल सारी लैंग्वेजेस की अगर बात करें, तो आप कह रहे हैं कि मे बी फर्स्ट डे इट कैन बी 40 to 45 crores. एग्जैक्टली. तब तो वो आराम से 42 43 तक आराम से जा सकती है. इफ इट ओपन्स टू, फॉर इंस्टेंस, इट ओपन्स टू 39 crores also in Hindi. It has the legs, it has the presence, it has the tentacles, जैसे कहते हैं कि अलग लैंग्वेजेस में आ रही है. तो it has that appeal in the smaller languages also, in smaller, I'm saying, in the other languages also, regional languages also, to have that kind of impact, to really be 4-5 crores, maybe 6 crores also, in those territories combined, which is a great number to begin with, because in those territories Hindi के भी shows लगते हैं confirm, because there are audiences who patronize only Hindi films in terms of in those states, in those territories also. So it's a mixed match that time. So उसको भी दिमाग में रखते हुए you can figure out that it will be that. And I genuinely want to also point out कि the strategy they are using in India right now for the film. So there were a lot of popular अभी पोंगल था, राइट? पिछले इस हफ्ते पोंगल का फेस्टिवल गया है. सो लास्ट थर्सडे से जब यहाँ पे विजय की तमिल पिक्चर रिलीज हुई है, चिरंजीवी सर की तेलुगु पिक्चर रिलीज हुई है, एंड ऑल्सो अजीत सर की तमिल पिक्चर एक और रिलीज हुई है. So all of these films that have released, they all have had Pathaan's hard coded trailer in that specific language on that show also, because these films have great footfall. These are big films. It's a big holiday Absolutely. in Absolutely. in these regional pockets. So I think that they've done that, which is again a phenomenal strategy to drive home the point right at the end. Ki boss, hamari picture aa rahi hai. You have to, you're coming in that language also. So it intrigues the audiences in those situations also, which is a great look, I feel, which is also a great marketing ploy. राइट. 26th को अगर हम देखें, 26th को छुट्टी है, पेट्रियोटिक फिल्म है. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर से 26th of January? Sky's the limit. Sky's the limit. If the see, it all depends. For और हम तो बहुत टाइम से इस बारे में बात करते हैं कि अगर पिक्चर अच्छी हो ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता. It will find its audience. And I'm giving you a wrong example, but if you figure out कि something like last year Karthikeyan 2 करके पिक्चर आई थी, not too many people paid heed to it. It find its audience. Any film which works in whatever pocket, be it niche or popular in its approach, वो अपनी ऑडियंस कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है, और फिर वो ऑडियंस कितनी मल्टीप्लाई होती है, कितनी ज्यादा पेट्रनाइज होती है कि देखनी ही देखनी है पिक्चर, वो मिल जाता है. आई फील इफ द फिल्म इज गुड, इफ पठान हैज द bandwidth that it says that it has, that it's promising right now in its trailer, second day can be the highest second day ever in a Hindi film. It has the potential, it has all the workings right now, and because it's a 5-day weekend, if it goes like it's supposed to go, like it looks like it's going to go, I think they can cross over 200 crores in those 5
days completely. Over 200 crores, I'm saying. And Hindi Mm. only, I'm saying. So, which is a great marker that it will set. Siddharth Anand, the director, is also known as a top-heavy director. When I say top-heavy, what I mean is कि उनकी पिक्चरें ओपनिंग पे ज्यादा निर्भर रहती है. He packs in everything in his songs, in his promos, in his first looks. And he has a great mix between class audience and mass audience. He gives classy actors in massy settings. And massy settings, I'm saying action is a mass genre, right? But in action, in the way that you as a class audience also are intrigued to go and watch. So he gives you that great mix, and hence his films have a top heavy. मतलब पहले एक दो तीन दिन weekend पर it makes a major killing because audiences genuinely want to go watch that kind of setting. He's done the same exact thing in this because that's a formula that works for him. And it looks like पठान में भी वो वाइब दिख रही है कि बड़े एक्टर्स थोड़े अलग सिचुएशन में बड़ा एक्शन वॉर से बड़ी पॉलिश फिनिश वाली पिक्चर दिख रही है, फिनेस वाली पिक्चर दिख रही है, which again intrigues the common man, at the same time a person who's going to be in a classier setting to go and watch the film in the first, second, third day, fourth day, in that way. Fantastic. Okay, so आप कह रहे हैं कि over 200 crores Hindi itself in the first 5 days, and if you include say the other languages, so we are looking at maybe over 225 or something like that, which can Confirm. be humongous. Confirm. And we are being very, आप भी जो बोल रहे हो अदर लैंग्वेजेस का और मैं हिंदी का अगर जैसे भी बात कर रहे हैं, Conservative. आई थिंक वी आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव Yeah, क्योंकि पोटेंशियल इज टू रियली सीलिंग इज वेरी हाई फॉर दिस. मतलब ये इजीली क्रॉस कर सकती है सीलिंग. Again, like I said, if it's working, if it's a great film, it delivers on what it promises. See, like sky is the sky, limit. sky is the limit. Okay, no, we will come to the promo part of it because I think you have a tremendous experience. I think anyone within the industry वो एक promo से idea मिल जाता है कि that whether the movie is going to have long legs or whether it's going to depend primarily on the weekend. Interestingly, I think Siddharth Anand, especially with War, I think he has displayed that he's a director who can have a repeat audience, especially with War. Right. उन्होंने और भी बहुत सी उन्होंने फिल्में बनाई, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, बट War was a film जो कि both I think maybe in terms of jazzing up in terms of the entire action and the looks, it also had a heart to it. ओवरसीज की अगर बात करें, बिकॉज अमुल बहुत इंटरेस्टिंग सी आई थिंक चीजें हो रही हैं इस फिल्म के साथ में जो कि शायद पहले नहीं हुई. आई बिलीव Right. जर्मनी में 1 महीना पहले एडवांस ओपन हो गए. Right. Germany में there are other factors also, other pockets also, which are predominantly Shah Rukh Khan strongholds in terms of countries which really patronize Shah Rukh Khan films. Germany being number one in that sense, in that respect. Other foreign countries also have that for a Shah Rukh Khan film, but Germany more so. So they opened the advance as soon as I think the first song came out, teaser or slash song जब उन्होंने पहला छोड़ा, which is about a month ago. That opened there, and you're looking at now North America का भी number देख रहा था मैं जो opening के आ रहे हैं, which includes America and Canada. Um, Again, those numbers are phenomenal. So advance on those territories are phenomenal. What I think coming on the 25th also gives them the opportunity, even in Middle East, even in India, even in abroad, they're having a pan world release, which is at the same time across the world, everyone can access to the film, has access to the film, which is again a great strategy, which is pinpointed to maximize its day one worldwide and have that kind of an impact. सरप्राइजिंगली अभी तक इंडिया का एडवांस नहीं खोला है, विच आई फील कि खोल देना चाहिए था, क्योंकि मैं ही 3-4 बार जाके अपने टिकटिंग एप्स पे देख चुका हूँ कि बॉस कब कब टिकट छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आईमैक्स में देखनी है, मुझे पर्टिकुलर टाइम पे वेडनेसडे को देखनी है, and so I'm planning everything and I can't find the tickets only, so might as well have to call Yashraj for that. But I'm saying right now in overseas, the way they have planned this out, the way the advance is, it's phenomenal, and it's a true testament of the great superstar that Shah Rukh Khan is. The global icon that he is, that he warrants that kind of a opening, that he warrants that kind of a ingenuity to have those kind of advances opening so many months in advance. So he warrants that.
and now you can see the fruition of the same. You can see how the opening numbers are going to reflect that. If by whatever tidbits we are getting through, it's going to have a phenomenal overseas day one, which is again going to be a record breaking one. It on the paper it looks like that right now. राइट, इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे है. जी That's a holiday as well. So I think interestingly शाहरुख की फिल्मों को ऑस्ट्रेलिया में उतना रिस्पॉन्स शायद नहीं मिला था, but I think this film is going to change that. right, absolutely. And see, Hmm. it's newer audiences you're going to tackle at different places, right? Like he's Hmm. also not been in a film 5 साल से नहीं आए हैं, मतलब almost Zero was the last film he did, Yes. which is around Yeah. Zero was the Yeah. last film, which is around 2018, if I'm not wrong, December or November में. So Yeah. it's been a long time. People have not seen him on screen, and audiences have also developed and have had a different situation right now. India is shining right now. If you see Triple R doing the kind of noise it's doing, so it also intrigues other audiences to other big films that are coming from the same region. At that time, that happens. That's a normal situation, and be it an Oscar buzz or the awards that Triple R is also winning, it just intrigues audiences to go and watch. अरे ये country से एक और picture आ रही है क्या, ये देख लेते हैं. So it just gives that kind of a placement. I think the timing is bang on. जैसे आप बोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया डे है 26 जनवरी में in Australia. So that also will have newer audiences experiencing a Shah Rukh Khan film who are going to get that kind of a bang for its buck when they see. Maybe they're not a fan, maybe they're fans of Deepika, maybe they're fans of John, maybe they're fans of Shah Rukh or this genre in particular, or Hindi films for that matter. So that just in like that level just keeps rising up when they are given an opportunity to watch this film. So Shah Rukh is an overseas superstar. That goes without saying. That goes behind as back as Dilwale Dulhania. That really broke the norm for Indian films in the Western diaspora as well. Which now he's going to probably milk it in his return after so many years. Amul, within the film industry, people who are say part of the industry, देखिए दो चीजें होती हैं. एक तो ये होता है कि जो सोशल मीडिया पे किसी भी फिल्म के बारे में लिखा जाता है, जी. वो एक चीज होती है. लेकिन फिर एक जो दूसरा होता है वो टॉक होता है, इनर टॉक होता है, विच इज द रियल टॉक. आपका क्या असेसमेंट है प्रोमो को लेकर? व्हाट इज एग्जैक्टली इज द इनर टॉक अबाउट पठान? See, the inner talk is that. मतलब can I give you a little bit of spoiler इस पिक्चर का कि नहीं देना है हमें प्लीज spoiler? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो जैसे अहेड. आप द टॉक का सबसे ज्यादा सब लोगों को यही एक चीज कह रहे हैं कि वी ऑल आर अवेयर दैट सलमान खान हैज अ एक्सटेंडेड कैमियो इन द फिल्म एंड many people in the industry spoke to me and they said अरे इनको सलमान भी डाल देना चाहिए था अगर 15 दिन पहले ही ट्रेलर छोड़ रहे हैं ये पिक्चर का तो. So my point is कि शाहरुख coming is a bigger event anyways, and if Salman is in an extended cameo in the film, it's not a 5 minute role, it's a 20 minute role apparently in a 3 hour plus film. So that will, in its own merit, when people are consuming the film in the theater, will blow up. And you're in the world right now of social media driven world. People will take pictures, might even take a video, and that will blast up, and intrigue will build up in a whole other grassroots level scenario. So I feel कि अगर नहीं भी दिखाया तो कोई खराब बात नहीं है. I think वो impact उतना ही रहने वाला है. It's a hero ट्रेलर विच इज, जैसे हम कहते हैं हीरो ट्रेलर उसलिए कहते हैं कि वो हीरो ट्रेलर जब तभी काटते हैं जब ओपनिंग के पीछे हम देख रहे होते हैं कि फर्स्ट डे पे क्या आ रहा है. सो इट्स ए हीरो बैक ट्रेलर. इंडियन सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को हिट कर रहा है विद जय हिंद. इन द एंड द वे शाहरुख इज लुकिंग, द वे द एक्शन इज, द फिनेस जैसे हम बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ी देर पहले. So all of those points it's tick off. Everybody in the industry also overall are of the opinion that this is a film that they will want to watch. I know so many different pockets जिनके साथ मेरी ऑलरेडी बातें हो रही हैं कि यार वेडनेसडे को कितने बजे जाना है. कोई बोल रहा है आईमैक्स में देखना है, कोई बोल रहा है नहीं देखना है, कोई बोल रहा है पीवीआर जू पे ही देख लेंगे. सो देर आर कॉन्वर्सेशंस राइट नाउ and it's everywhere. Like I said right at the start of this conversation with you, Faridun, कि palpable है, and that palpable फीलिंग आपको तभी पता चलती है जब हर जगह से उसके बारे में बात हो रही है. करेक्ट. देयर इज नो कॉर्नर जहां पे बात नहीं हो रही. गुड एंड ग्रेट बातें ही हो रही है.
कहीं पे भी एवरेज या बैड बातें नहीं हो रही है, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि पिक्चर तो चलनी चाहिए यार, पिक्चर तो चलनी चाहिए, इतनी बड़ी पिक्चर है, इतना अच्छा बज है, ट्रेलर भी खराब नहीं है, इतना अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है सब चीजों को, तो यू हैव टू बी इंक्लूसिव इन दैट सेंस, तो वो उस हिसाब से बहुत अच्छा बज है उसका इंडस्ट्री Okay, कॉरिडोर्स में भी। what is your prediction? Will there be like 6 a.m. shows, 12 midnight आई shows? होप सो, आई होप Like, सो। मैंने एवेटार देखी है सुबह 12:30 बजे का शो, रात को 12:30 का शो, wow, और मैं 3:30 बजे जब बाहर निकल रहा था, 3:30 का भी शो फुल था, और मैं आईमैक्स में देख रहा था, तो लिमिटेड स्क्रीनिंग स्क्रीन्स होती of है course, of और course. लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उस उसमें भी वो 3:30 का भी शो फुल था, तो आई एम अज्यूमिंग कि दे कैन ऑल्सो मैक्सिमाइज दैट वे फॉर देम। इट्स अ वर्किंग डे, विच इज अगेन माई बिगर कॉन्वर्सेशन, it doesn't warrant that kind of a response. Like when Avatar came, December is generally treated as the Saturday of the year, right? कि सब वाइंड डाउन कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा नहीं रहे, वर्क फ्रॉम होम अब बहुत नॉर्मल हो गया है। सो व्हेन अ फिल्म लाइक Avatar comes, people were there in hordes because they are there to watch James Cameron film and Avatar, which are two big pluses. The film is run over 370 crores in India alone here. So Mhm. you see the market that it has, the potential that a film like that has. So they opened and they had a 6:30 show also in the morning. So I am assuming they should, I think YRF will push for something like that. But again, like I said, if working day nahi hota, so maybe the possibility would have been different. There are talks that there may be a promo of featuring Salman. Is that a possibility? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी इतना बज हो गया है ना, दे कांट गो इन ओवरकिल राइट नाउ। Mm. I feel that they will play smartly because that's the intriguing thing now. If you're watching a film and it shock people, like हम इंडस्ट्री के हमें पता है वो बात, but I don't think layman's में इतनी popular है वो बात. So imagine a high point for someone who's going to watch it for a Shah Rukh Khan film and sees a Salman's cameo and an extended cameo at that. So you will peak at that. At one point they were thinking कि पठान का ट्रेलर भी नहीं छोड़े. That was a big conversation that they were against the idea of putting out a trailer. Midpoint in December, they were genuinely contemplating that. So because the buzz is so strong, you don't want to put out wrong communication at this point to dilute that buzz, right? You want to keep that momentum high and peaking until unless the release happens. So those are strategies. I don't think that they will have a, like they will put out a Salman centric trailer because communication miscommunicate हो जाती है, right? कि हम Correct, क्या correct. कहते हैं, so इतनी बड़ी पिक्चर है, so they will also want to फूक, जैसे कहते थे मेरे डैड, फूक फूक के कदम ले रहे, तो वो लेंगे वैसा ही फूक फूक के कदम, आई फील। Amul, I understand that you're extremely busy right now, but मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है. Once again, I would ask about the inner talk within the film industry. Uh, I think किसी भी फिल्म में, स्पेशली कमर्शियल फिल्म में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री कैसी है. बहुत बार राइट। जो किसी भी गाने के बाद या फिर फिल्म के प्रोमो के बाद में जो हम सोशल मीडिया पे जो हम रिस्पॉन्स देखते हैं, शायद वो सही पिक्चर नहीं होती है. लेकिन जो एक इनर टॉक में होता है, वो उसमें पता चल जाता है कि वो उसके अंदर वो एक जज्बा है, वो एक फायर है कि नहीं. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, केमिस्ट्री. It's a rock solid chemistry. It's 2007 onwards when they did Om Shanti Om together. They've done a few other films in the interim, and वो सारी पिक्चरें भी चली हैं, या उनकी उनकी पेयरिंग को तो लोगों ने हमेशा सराहा है. So I think what they've done interestingly is that they've kept this action element in their romance right now. Because अब romance में भी इतना उन्होंने मतलब the songs are also very differently mounted. So वो romantic गाने नहीं है. So it gives you a different kind of a zone. I think it's more mission driven, and वो क्या कहते हैं उसे, ब्लैक स्मोक है उसके अराउंड, उनके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स के अराउंड. Are they doing to do whatever they are doing the song in the song? Are they doing to get some other information or something else? Because it everything looks like a part of the mission. Having said that, them two together always make
make the right kind of noises. Industry also is very appreciative of both of them together on screen. It's a pairing that is loved not only internally in the industry, but also externally in the audiences. You see the kind of success they got in a Chennai Express, which uh, is a testament of how strong and how great that film did. And even after so many years, the film is spoken so highly. I think 10 साल हो जाएंगे चेन्नई एक्सप्रेस को अभी, एंड 2000 आई थिंक 7 या 8 में आई थी ओम शांति ओम. सो देयर इज year upon year of how strongly their bond has now gone, and coming back together. It's a great casting, in that sense. It gives you the great, insight of how their relationship would also be together right now on screen, chemistry wise, after so many years. So I feel it's a great move. इंडस्ट्री इनसाइडर्स में भी वो बात सराही जा रही है. ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है कि ऑफ लग रही है या ऑफ पुटिंग लग रही है उनकी उनकी ऑन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री. Absolutely, Amul. Thank you very much for your wonderful insights, and thank you for your time. I understand that this is a very very, I think, थैंक यू hectic सो मच फरीदन. आई period एम for रियली you. सॉरी टू कीप यू वेटिंग. No, no, थोड़ा डिले absolutely, हो गया. absolutely fine, man. Thank बट you very much for your time, man. Thank you very much. Take आपको care. जब भी बात करनी है प्लीज टेल मी. विल बी आई बी मोर देन हैप्पी टू कम अराउंड एंड डू दिस Thank you अगेन. so much. Thank you very much. Thanks a lot. हैव Thank you, man. अ ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच फरी. You बाय too, बाय man. बाय. You too. Take care.